Hello everyone, this is Amit and welcome back to Boomi Techie. Today we will learn about basics of Boomi iPaaS and integration things. So this is a first video of 2024. So let's get started. So here the first question will be about the Boomi. Like what is a Boomi? So here we can see Boomi is a cloud-based integration platform as a service iPaaS and previously owned by Dell. It design integrate data application processes across the business of all sizes. So here we can see few key points like integration allow to customer to automate the process, transforming the data, scale their operations, help to connect the integration with businesses system easily. Second point is data management. So Boomi offer end-to-end scalable, including data quality, governance, API management, applications, integration, workflow automation, and BTB EDI network management. Third point is connectivity. Boomi platform allows user to build cloud-based integration processes known as Atom and transfer data between on-prem applications and cloud. Easy of use. Boomi includes templates for standard integration data readily available for user to download, install, and configure their account. It uses connector to integrate source and target system. Next is scalability. Boomi Cloud Native infrastructure allows user to deploy integration rapidly, like within a week, days, even hour. So next question is what is data integration and why we need it? So data integration is a process of combining data from different sources into single unified view, right? So this is a process allow you to connect the dots between virtual all your different structured, unstructured data source such as social media platform data, app information, payment tools, CRM, ERP, report, etc. So now we can see here few key points like efficient data management, meaningful insights, actionable intelligence, holistic view of the data, improve customer experience. These are important key points. So next question is what are benefits of using Boomi? So Boomi offers several benefits that make it popular choice of data integration. Here some key points like easy and faster integration. So Boomi provides a visual UI and low code platform, making integration easy and fast. It offers a large collection of tools such as a pre-built connector, processes, library, and crowdsourced guidance of mapping. So next point is unified platform. Boomi allows organization to connect people, processes, applications, data, devices in a unique and unified platform. So third point is excellent data quality and management. So Boomi provides the consistency and quality of information, supporting smart data-driven decisions. Fourth point is full stack security. Fifth point is best cloud native architecture. Sixth point is market leadership. So next question is how Boomi differ from Lexi method. So Boomi differ from Lexi integration method in several ways. First point is cloud native architecture. Second point is speed and efficiency. Third point is unified platform. Fourth point is packaged component and deployment. So you can see here all the points. So next question is the interface that we create or solutions that we make through Boomi. Can we make them through Java framework as well? Yes, it's possible to create similar interface and solution using Java framework. So the first point is Boomi easy of use. Boomi provides a visual interface for designing, deploying, integration, which can be easy and faster than coding everything from scratch in Java framework. Second point is pre-built connectors. Boomi comes with large number of pre-built connectors for various systems and services, which can save a lot of development time. In Java framework, you might need to build these connectors manually. So third point is Boomi APIs. Boomi provides an API that allow customer and partner to automate the creation of integrations.
Fourth point is Boomi Flow API first architecture. Boomi Flow offer an API architecture stack based on REST API. These allow developer to tap into platform at various levels using their language of choice Java, C Sharp, Ruby, Node.js, etc. Next question is what are competitors of Boomi? So here we can see few competitors name. So as we know, Boom is iPaaS integration platform and service, and in the market there are many iPaaS like MuleSoft Anypoint platform, Workato, Jitterbit. Next question is what are prerequisites for learning Boomi? So here we can see understanding for integration, familiar with the cloud services, basic technical skills, problem solving mindset, right? So understanding of integration, things like knowledge of system integration concept, how different system communicate with each other. Next question is before diving in Boomi, what should we must know? So first point is unified platform. Boomi offers a unified platform for integration and automation, which is self-managing, self-learning, and self-scaling. So second point is connectivity. It enables instance connections between app, people, and things along the data discovery and synchronizations. Third point is efficiency. Boomi enhance the efficiency of various systems like NetSuite, SAP, Workday, Amazon services, and ServiceNow. So fourth point is a support ecosystem. Boomi provides access to large ecosystem including 100,000 plus users. So now we will see about the Boomi platform. So this is a Boomi platform, boomi.com. This is the official platform. So in upcoming video, we will cover only integration part. And after integration, we will touch master data hub and API management, all the things. So see, this is an integration platform. And if we log in integration platform, so we can see this interface, right? So here we can see all the platform integration, master data hub, API flow. So if we want to access the platform, we have to click here, right? And this is a resource like documentation. If we want to learn documentation of the Boomi, so we have to click here. Support system, community, training, and certificate, right? So in the next video, we will see the first example of the this course. So let's wind up for 2 days. Thank you. For my efforts to create a free video, you can help me to buy a coffee. This is my UPI number 8826321875 at IBL. Thank you. Hello everyone, this is Amit Verma. Welcome back to Boomi Techie. So today we will cover basics of Boomi platform. So in Boomi community portal, we can check these content and see here getting started with the Boomi platform, and you can check here plan activities getting started with the Boomi platform. So let's click here and we can see here about the Boomi community and Boomi platform related content. So here there is a 3 lessons. So in Boomi community, the first question is what is a Boomi community? So you can check community.boomi.com. So you have to click here for Boomi community portal. You can directly jump into Boomi community portal through community.boomi.com, right? So you can check the below content, training and certification. So after clicking here, expand your knowledge of Boomi platform with free online training and certification, right? Role based path. So discover a told learning path designed for specific Boomi roles. Next one is event groups, user groups. And in this tab, you can learn, connect and engage with the Boomi expert and user remotely or in person. Knowledge and discussions forum.
So here, collaborate and enhance your understanding by engaging with the fellow user in knowledge sharing and topic discussions, right? So next topic is resources. So finalize yourself with the Boomi terms and abbreviations through grocery. So you have to click here and you can check so terms of grocery within the Boomi integration. During the creating interfaces processes, you have to cover many keywords like account ID, action, agent, container, API control, atom. So all important keywords you can check here. So you can check the definition of all the keywords, right? So here you can see cache, channel, child or sub processes, right? Here you can see B2B, bandwidth, batch, documents, Boomi API. So all the important keywords and definitions you can check through grocery of terms portal. This is also under the Boomi community portal, right? And next one is find a list of all Boomi courses and certifications. So see through this tab we can check all the Boomi courses and certifications like integration, API management, data hub, event stream, B2B EDI, flow, task automation, DCP. These are free course and certification options, right? Next one is find answer to most common questions. So here we can check most common questions like how to log in Boomi community portal. So here you can see you have to log in through this, not Boomi platform users, right? Next one is about your learning, your achievement. So you can check here the courses. Next one about the how to find a course on a specific topic. So you can check all and you can also filter the course here, right? So next one is how do I register for learning plan and track. So here you can see these all are under the Boomi community portal, right? Let's check Boomi platform. So this is lesson 2, and for the Boomi platform you have to hit platform.boomi.com and you can check. You can see these type interface like services, discover, resources, labs, setting, training and first name, last name, services, getting started, resources, during the forgot your password, enter your email and select reset password, right? A link is sent to your email and is only valid 30 minutes. So create a new password and select save. So that is a policy how you can reset your password, right? So in training account you should have automatically open provisioned platform training account. Platform training accounts have a 30-day expiration by default. However, they are designed to be available to you as long as actively pushing Boomi training certifications, right? So I already logged in platform.boomi.com, so
let's see here. This is platform.boomi.com, and you can see here all the services: integration, data hub, API management, flow, event stream, task automation, right? Discover resources. You can see documentation, supports, community training. In the lab, you can see bundles, process library, connectors, setting. You can switch your account from general account to training account to general account, right? So let's click here, integration module. So you can see the canvas. Here we can create our integration, our processes, our interfaces. See, this is a demo how you can create your process, or you can say your interfaces. These are shapes, these are types of shape: connector shape, execute, and logic. 3 types of shape. In the connector, you can see 4 connector are featured connector, and you can see here all 274 connectors here created by Boomi. This is execute shapes, map, set property, message, notify, program, command, process, call. We will cover all the shape in upcoming video. And this is a logic shape: branch, root, decision, exception, stop, cleanse. So all shape we will cover in upcoming video, right? We can create the package component, deploy, we can check deployments, right? In the dashboard, you can check account dashboard, HTTPS status, real-time dashboard status, right? Manage, you can manage process reporting. We will cover all the points in upcoming video. So let's jump into Boomi community. So here we can see same type interface: integration, master data hub, API management, flow, and event stream. You already seen here in Boomi Training platform. Let's see again. Integration, data hub, API management, flow, event stream, task automation, right? So now we will jump into next point: training accounts. We already covered all the things. Here settings, how to switch from normal account to training account to normal account. And this is a platform status, provides access to performance status of the Boomi platform, clouds and services. This page includes schedule maintenance, status history, status of regional cloud, as well as other Boomi resources. So there are 2 options. You can reach the status in 2 ways: HTTPS status.boomi.com, and another option from the bottom up platform home page. So let's click here upon first option. So here we can see notifications, runtime history, about the atoms, about the atom server zones like American, Asian, Singapore. And there is another option from the bottom up platform home page. So here Boomi platform, click integration process.
integration module. So in the bottom option we can see platform status and announcements. So here we can also jump through to bottom status announcements. We can jump on same page like status.boomi.com, and we can check all the notification, all the scheduled notifications here, right? So let's jump in our course. So we are already covered this platform status and announce resources. So resources, you can check access the Boomi platform. Here you can check the platform. See, this is a platform.boomi.com. Next one is find recent and upcoming product release. So through notification you can check recent upcoming product release date, right? And the next one is access pre-built Boomi solutions and deploy directly to your existing Boomi environment. So through the discover tab we can check. So you have to click here discover, and you can check the pre-built recipes that is created by Boomi. Through recipes, pre-built recipes, we can learn the concept and you can apply these concepts in your integration, right? So let's see next point. So I think this module is finished. Let's jump into lesson 3, Boomi community. So in Boomi community you have to hit community.boomi.com, and then you can check community.boomi.com portal, or we can say page, and here you can ask the questions, right? So you can check here all the asked question and answer. Can we have Boomi AS2 certificates for 5 years valid or longer? So you can check the answers. I am new Boomi cloud customer, so what do I do prepare for the journey platform release? So you can ask any question related to Boomi and you can check the answer also, right? So let's jump into our course. Here you can see training and certifications options, role-based path, event user group, knowledge and discussion forum, right? Resources. I think we are already covered all the points. Now we will exit from this course. Thank you for joining us. Let's connect to upcoming video. Hello everyone, this is Amit, and today we will see new terminology of Boomi. So let's get started. So today is 6th of March 2025. So Boomi updated a few terminology. So let's get. So here we can see in the March 2025 platform release, Boomi will update some of terminology for our services. This is to make Boomi specific terms more intuitive, better aligned and common industry concepts, right? And provide more specificity as our platform evolve. Starting on March 9, 2025, you will see the terms below updated throughout the applications and documentations. The new terminology will be incorporated in training, content and other assets over the time. So here we can see what terms are changing. So let's see. These changes are primarily
for integration runtimes, including the types of runtimes, Boomi hosted runtimes, options, and various related user interfaces and features. Like old terms is Boomi Enterprise Platform. So now we will see Boomi Enterprise Platform, right? And we can see Boomi Platform. Okay, next one is Enterprise Go. So now we will see Boomi Pay As You Go. Another one, Boomi Container Generic. Now we can see runtime. Atom, we can see basic runtime. Molecule, runtime cluster. Atom Cloud, runtime cloud. Cloud module, runtime cloud cluster. Cloud Atom, cloud attached. Cloud Atom, cloud attachment. Next one, Boomi Cloud, public Atom Cloud, public cloud. These terms now we will say public runtime cloud. Another one, private Atom Cloud, virtual private cloud. Now we will say private runtime cloud. Next one, local or on premises, private self-host, customer hosted, known as local. Atom management, runtime management. Atom worker, execution worker. The new one is runtime worker. Next one, what's not changing. So these one like platform API endpoint names, request, response, structure and fields value. Platform event types such as atom dot status, connector SDK, interfaces, methods and variable, system scripting interfaces, methods and variables, runtime installer files, installations directory path and local configuration files, runtime container, property keys and value, although user interface levels will be updated. Okay, thanks. Hi everyone, this is Jamito Verma and welcome back to Boomi Techie. So in this video we will cover Boomi integration essential things. So let's get started. So here you can see I created a doc file for Boomi integration essential. So here you can see all these points. Create a folder in Boomi Enterprise Platform. So we have to create a folder first in Boomi Training account. So हम एक folder create करेंगे. Next step is next point is what is step. So we will learn about the step and how to use step in Boomi activity. Third point, process library. So we will check about the process library and how to install the process from the process library. तो हम ये सब देखेंगे कि प्रोसेस कैसे सेव करेंगे, हाउ टू सेव द प्रोसेस एंड हाउ टू टेक्स्ट द प्रोसेस आल्सो. Next one is install runtime. So here you can see Atom. So Atom is a runtime engine, you can say, and we can execute the process through runtime. Okay, so हम देखेंगे runtime install कैसे करेंगे. टेस्ट द प्रोसेस को टेस्ट करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट एन एनवायरनमेंट. सो हाउ टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट एंड हाउ टू अटैच रन टाइम इन एनवायरनमेंट. ओके, सो वी विल सी इन दिस वीडियो. नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज कंपोनेंट एक्सप्लोरर. सो कंपोनेंट एक्सप्लोरर हम देखेंगे, रिवीजन हिस्ट्री हम देखेंगे. सो कंपोनेंट एक्सप्लोरर मैं आपको बता देता हूँ पहले.
तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, बूमी ट्रेनिंग अकाउंट में जाओगे, सर्विसेज में जाओगे, इंटीग्रेशन सेलेक्ट करोगे, देन आपको कंपोनेंट एक्सप्लोरर दिखेगा। आप कंपोनेंट एक्सप्लोरर यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो आपको दिखेगा सारे कंपोनेंट, सारे प्रोसेस यहाँ पे आपको दिखेगा जो आप ऑलरेडी क्रिएट किए रहोगे, या फिर कोई फोल्डर होगा, फोल्डर में आप देख सकते हो। जैसे देखो इस फोल्डर में आप देख सकते हो ये सारे प्रोसेसेस हैं, ठीक है। और देखो ये कंपोनेंट है, मैप हम देखेंगे आगे कंपोनेंट क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है, स्टेप क्या होता है। तो ये कंपोनेंट एक्सप्लोरर है, यहाँ पे ये पॉइंट हमने कवर कर लिया। तो लेट्स सी on the top, we need to know about these point: integration, component and its steps. This is a must know these point, like integration, what is integration, component and step. So integration देखते हैं। Integration in Boomi refers to process of connecting different application system and data source to enable seamless data flow and communication. Boomi provides a cloud-based integration platform that allow user to design, deploy and manage integration efficiently. ठीक है। सो इंटीग्रेशन हम क्या कर, इंटीग्रेशन हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक पाइपलाइन क्रिएट करेंगे या एक प्रोसेस हम बनाएंगे जो डिफरेंट सोर्स सिस्टम से कनेक्ट होगा। सोर्स सिस्टम बोल सकते हो या डेस्टिनेशन सिस्टम बोल सकते हो, जहाँ से हम डेटा को पुल कर सकते हैं, डेटा को फेच कर सकते हैं, डेटा को सेंड कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। तो ये जो हम कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एंड बीच में हम कुछ बिजनेस लॉजिक क्रिएट करते हैं थ्रू स्टेप्स। तो ये सारे जो चेन होगा, जो एक्टिविटीज़ होगी या जो प्रोसेस होगा, ओवरऑल पॉइंट ए टू पॉइंट बी और बीच में जो भी हम बिजनेस लॉजिक यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ को, सारे स्टेप्स को कंबाइंड रूप में हम एक इंटीग्रेशन बोल सकते हैं। इंटीग्रेशन कैसे बोल सकते हैं कि हम रियल टाइम पे डेटा फेच कर सकते हैं या डेटा को शेड्यूल कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्स सिस्टम, लाइक डिफरेंट एप्लीकेशन और डिफरेंट डेटाबेस। देखो एग्जांपल है, एग्जांपल क्या समझो, सपोज करो आप अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाए हो और आप आउट ऑफ स्टेशन हो, तो आप कैसे वॉच करते हो अपने घर को? आप ऐसे वॉच करते हो कि आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन होता है, एक ऐप होता है, उस ऐप में वो कैमरा इंटीग्रेट होता है। आप कहीं भी उस ऐप को ओपन करते हो और वो डेटा जो वहाँ पे लाइव चल रहा होता है, रिकॉर्ड होता रहता है, उसको आप अपने फ़ोन में देख सकते हो। सो ये भी एक तरह का रियल टाइम इंटीग्रेशन है, ठीक है, क्योंकि एक डेटा जनरेट हो रहा है कहाँ पे, आपके फ़ोन कैमरा में जो आपने घर पे लगाया है, और वो डेटा पास कहाँ हो रहा है, वो डेटा पास हो रहा है आपके फ़ोन में। आप सपोज करो कहीं गए हो 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर हो, तो वो डेटा आप लाइव देख सकते हो। तो इस पूरे प्रोसेस को आप इंटीग्रेशन बोल सकते हो, क्योंकि पॉइंट ए से डेटा जा रहा है पॉइंट बी में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप सोच सकते हो, जैसे एटीएम मशीन से अब जब डेटा वहाँ पे आता है, जैसे कि एटीएम मशीन में जब आप पैसे निकालते हो, टाइम में आप पैसा क्रेडिट करते हो, आपको रिसिप्ट मिलती है और सेम टाइम में आपको आपके फ़ोन में मैसेज आता है भी आपका अमाउंट डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, उसको आप देखते हो अपने फ़ोन में, ठीक है। तो जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, क्रेडिट करते हो, डेबिट करते हो, आपको रियल टाइम बेस पे फ़ोन में मैसेज भी आ जाता है और आपको वहाँ रिसिप्ट भी मिल जाता है। तो ये क्या हो गया, ये एटीएम मशीन जब आप पिन कोड डालते हो तो आपके एटीएम मशीन से आपका जो अकाउंट है वो कनेक्ट होता है और रियल टाइम पे डेटा ट्रांसमिट होता है। यहाँ आप कैश निकालते हो और वहाँ पे आपका
जो अकाउंट का डेटाबेस है वहाँ से एक मैसेज फेच होता है जो आपके फ़ोन में आता है। तो ये सारे प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कर बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंट सोर्स सिस्टम से ये जुड़े हुए हैं और डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। See here, Boomi provides pre-built connector also. So Boomi offer a wide range of the connectors to integrate the popular application and database. So Boomi, you can see in Boomi integration platform, there is a pre-built connector like Salesforce connector, SAP connector, Workday connector, or database connector. So you can connect these applications through those connector, right? Integration pattern, Boomi provides like it supports various pattern like a publish, subscribe, point to point, and real time. Next point is hybrid deployment. You can deploy your process on prime or edge environment, right? So Boomi provides option to integrate on-prem application to cloud-based application, right? Cloud-based application means database will be on cloud. Database will be on cloud. Any application will be on cloud, that is a cloud-based. Next point is centralized management. It provides tool for monitoring, managing integration from the single platform. ठीक है, सो ये सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑप्शन है Boomi इंटरप्राइज एप्लीकेशंस में। यहाँ पे हम जो भी प्रोसेस या जो भी API डिप्लॉय करेंगे उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे, ये देखो डायग्राम है, Boomi मीडिएट के रूप में काम कर रहा है यहाँ पे थ्रू API, ये इंटीग्रेट हुआ है। ये देखो सोर्स पॉइंट है, ये डेटाबेस है जहाँ पे डेटा आपको स्टोर मिलेगा। Boomi प्रोवाइड्स ऑप्शन फॉर स्टोर डेटा ऑल्सो थ्रू Boomi हब। वी कैन क्रिएट हियर मॉडल ऑल्सो, एंड दैट इज AWS PostgreSQL database. So through Boomi we can connect these database system and we can manipulate data also based on business requirement. Next point is component and steps. So let's see about component. See, a component in Boomi Enterprise is a reusable building block used to design and execute integration process. Components help define how data flow, transform and connects between different systems. So you can say component is a reusable entity we can use more than one time, right? See, types of component. Boomi is several component types, each serving a specific role and integration process. Like process component, that is a main component, the main process workflow that connects different source system, contain steps like connectors, transformation and logic. मेन कंपोनेंट है जो सेंट्रल कंपोनेंट हम बोल सकते हैं, वो प्रोसेस होता है जो हम पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, जो प्रोसेस बनाएंगे उसको हम मेन कंपोनेंट या सेंट्रल कंपोनेंट बोलेंगे। अब उस सेंट्रल कंपोनेंट में बहुत सारी स्टेप इन्वॉल्व होंगे, उस स्टेप में कनेक्टर होंगे, मैप होंगे जो डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, लॉजिक्स होंगे, कई सारे स्टेप होंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये प्रोसेस है, ये हमने एक प्रोसेस क्रिएट किया, तो ये हम एज ए कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक सेंट्रल कंपोनेंट बोल सकते हैं। और ये क्या है, ये स्टेप है, ये स्टेप है। ठीक है, तो बहुत सारे जब स्टेप को हम कनेक्ट करते हैं तो एक प्रोसेस क्रिएट होता है, राइट।
Connector component. Connector is also component that is used more than one time, like Salesforce connector, SAP connector, FTP connector, database connector. Next one is the profile component. Profile component define data. Next one, profile component define the structure of data moving between system. So through profile component, you can manipulate the data, like transform the data from one format to another format. Here you can see the example: XML, JSON, CSV, database schema. So we can transform data from XML to JSON, JSON to XML, XML to CSV, CSV to XML or database. Okay. See here, transform data from one format to another format. Next point is business rules component. So define condition logic. So here we can define the logics for validate the data, and you can set the rule also. This is also component, business rule. Process rule component, we can set the conditions and we can move the data through different execution paths. Custom scripting. So Boomi provides option to create a custom component through custom scripting. You can use JavaScript or Groovy script here. Next one is a document cache component. So document cache component provide option to hold temporary data, and that data you can use the further in the process. We will see all the steps, all the component in upcoming video. See the example how component work together. Synchronize customer data from Salesforce to SAP. So you have to use connector, retrieve data from the Salesforce. Then profile, define a data format from JSON to XML, XML to SAP. So here you can transform the data from JSON to XML for SAP, and then through map component convert JSON to XML. Then you can use business rules for validate customer record, and then connector to send transform data to SAP. So that is a step to sync customer data from the Salesforce to SAP. So in Boomi, step is individual action within the process that define how data flow from the system to another, and steps are represented as icon shape inside the process and connected in sequence to perform an integration. So see here, this is a connected the grouping of step, you can say the process. So types of step in Boomi we will see in upcoming video. Let's explain. Start step, the entry point of the process, that is a start step. It defines how data is received through API request, database query, and pickup, file pickup. Example says for connector get customer action, right? And next point is a connector step. So connector step provide option to connect any source system or destination system through the connector, and we can perform the action also, like the get, post, query, and send. And next point, data processing step. These steps modify the data from within the Boomi flow, like map, business rule, decision, message, exceptions. So these all steps we can perform during create a process, right? One is a flow control step. So branch, route, and try and catch step are flow control step type. The final step of the process define whether the process should stop or loop back. Example, end process after sending data to SAP. So here you can see the scenario and example. Sync customer data from Salesforce to SAP. So you have to do these points: start step, map, business rules,
decision step, connector step, and end step. Right? End step, you can see here there is no end step. This is a written document step, so I am putting end step stop. There is option continue process other execution paths, so you have to check for this statement and click OK, and you have to attach. Okay, so Boomi step versus components. So action within the process, that is step, and reusable elements, that is a component. So step we can't use more than one time, but component we can use more than one time. Right? So let's get on top. We need to create a folder. So let's create a folder first. So you have to go to Component Explorer and then select Training and select 3 dot and create a new folder here. So you can write a name of folder and save it. I already created. You can see here Amit_March. After creating a folder, you have to select process library. Right? So select first process library, and I selected a process library. Then you have to install the process. So write here process name, converting account information to Excel. You have to install. I already installed, so that's why I'm not clicking on install icon. So you have to install this, and then you can see this activity. Right? So next point is install runtime and test the process. So for test the process, for test this process, you have to save first, and then you have to go. Then you have to select runtime management, and then here you can create a environment first. You have to create an environment. The 5th point, create an environment, then install the runtime. So create an environment through this icon, new, select environment, select environment name. So you can select the environment name is it. So here you can write the environment name T test. So here you can write the environment name text, and you have to select test type. Environment classification is test type. Then save it. Okay. So then you can see the environment. Here I am already created environment. So next point is I created environment. So next point is install runtime. So for runtime, you have to select basic runtime, and then you have to select cloud here, and then install. I already installed, that's why there is no option to install again. So after installing a runtime, you have to click your environment like this, and you have to select, you have to choose, you have to attach that environment. So see here, I am detaching the environment first, then I will attach. So here I am selecting environment, and then I have to choose item like a runtime. So here I am selecting, I am checking this point, and you can see one item attached. You can see here in test environment item runtime is attached. Right? So we covered the first point, second point, third point, fourth point, fifth point, and now
You now we have to test also. So let's test the process. So for test the process, you have to click, you have to select build option, and you have to choose start step. For start step, you have to connect. You have to create a connections here. You have to select the connections. Connection name is Boomi Training FTP V2. That is connection, and you have to fill those, and you have to fill these data. Okay, host, port number, connection mode, remote directory, SSL mode, username, right? And then save and close, right? And then you have to choose action query and select operation. In operation, you have to select. You have to write a operation name, account XML get, and then save it and close, right? I already created, so that's why there is no option to create again. If I clear this connection, so you can check here plus icon. So through plus icon you can create, right? So there is no need to create again, so that's why I use that connection. So I'm selecting this, and for operation also, if you want to create new, so you have to clear this, and you have to choose plus icon, and you can import the operation. You can set the operation name. So I'm already created, so there is no need to create again. So I am closing this, and again I am selecting account XML to get. Okay, and save it, and then I am selecting test icon, and then you have to choose runtime. I already created and attached that runtime to environment. Then you have to run. Okay, you can see here our process is running mode. First in start step, then end, right? So you can see the two document fetched from the FTP. This is a FTP connection. So we can here we are getting data from FTP record, and you can see the documents data. See, that is a data, right? Second data is this. Okay, and here is a left arrow icon, so you have to click for edit mode, right? So that's all for today. So we'll catch up in upcoming video. Thanks. Hello everyone, this is Amit Verma and welcome back to Boomi Techie. So today we will learn introduction to Boomi process and introduction to component, creating folder in integration. Folder name will be integration essential and connections, and then we will install a process from process library. Process name is converting account information to Excel. So first we need to know about a process step. So here we can see introduction of the process. Step in the process are connected to create a business logic.
These steps handle tasks like splitting documents, modifying data, making decision, and routing information. Each step has configuration settings and is in the step plate. Point 2 is introduction to components. Components are reusable configuration objects used in process and deploy in the component explorer. Right? They are created one and referred by step across many integration process. Component is a reusable entity we can use many time in the process. Next point is creating a folder. Creating a folder in Boomi integration. So let's jump into Boomi integration platform service. So we have to create a folder name integration essential. So here I already logged in integration platform, and here we can see the services like integration, data hub, agent studio, API management, flow, event stream. So there are many modules. So we have to click on integration. After clicking integration module, we have to create a folder. Folder name is integration essential. So let's create a folder. Folder name is integration essential and save it. We can see here under the training AK, folder name is integration essential. Now we have created another folder. So folder name is connections, and the beginning of the folder name we have to put hash. Due to hash character, we can see this folder move on top, right? So next one is install the process from the process library. So let's jump into process library, and below the create new icon we can see process library. So let's jump into process library, and now we have to search essential, integration essential. We have to choose education services, and then we have to install connections and converting account information to Excel. So let's install, choose a folder, and install it. We can see the process, connection process. There is a 4 connector, right? Let's jump again into process library, and again we have to search essential, integration essential, and now we have to choose education services, and now we have to install converting account information to Excel. We have to choose the folder integration essential and then install it. We can see the process. This is a process name, converting account information to Excel, and we can see process here under the integration essential folder. See process name, and this is a connections folder. Under the connections folder we can see all the connections, right? Disk legacy, disk v2, FTP legacy, FTP v2, these are connections. We can see here also. That's all for today's video. Stay tuned. Thank you. Hello everyone, this is Amit Verma. Welcome back to Boomi Techies. So today's video we will learn 6 points. So we can see here.
First point is what is an environment. Second point is a runtime engine, about runtime engine. And third point, creating environments. Fourth point is what is a runtime cloud. And fifth point is install production and test runtime cloud. Name is a test training cloud and production training cloud. And attaching cloud to environment, like attaching a runtime to environments. So these are 6 points we will cover in today's video. So let's get started. So first point is what is an environment. So we can see here environment are workspace user create for testing and production purpose. Environments are not limited for just one. Administrator can create a multiple environment for testing and production purpose. And here we can see the diagram: environment, test environment and production environment, two types of environment. And here multiple environments we can create for test purpose and production purpose also. Second point is runtime. What is a runtime? Runtime engine. In Boomi there is a many runtime engine like Atom, Cloud, runtime engine, and Molecule. These are different type runtime engine. So basically runtime engine is where we can execute the program, where we can execute the Boomi process. So that is the runtime engine. So here we can see runtime is when a program is running. A runtime engine powers the program while it is running. Runtime cloud is a runtime engine you can use in the training. So we will see in upcoming video. Third point is a creating an environment. So let's create an environment first. So we have to jump into integration module, and here we will create an environment. So first we have to select a manage and go into runtime management, and plus new icon, choose environment, write a name, test environment, and environment classification, and environment classification is test, and save it. Now we need to create another environment. Choose environment and select name is production, and select classification production type and save it. So we have created two environment, production type and test type. Now go to next point. Here we can see the environment name is a test and production. Let's jump into fourth point. What is a runtime cloud? Then runtime cloud has a region-based feature that use the location information provided to connect the accounts to the closest region public cloud. Equality important regional clouds enable easy cloud addition to ensure reliable and efficient process performance. So now 5 point is install the production test runtime cloud. We have to follow same process. Go to manage and select runtime management, and then create a new, and here we can see basic runtime. So after clicking basic runtime, you can see classification of the runtime like local and cloud. Here we have to choose in cloud, and which one is nearest cloud. Singapore integration cloud. So we need to select test first, Singapore integration test cloud, classification type, and attachment name is test training cloud, right? Test training cloud. And okay, now we have to create unattached runtimes test training cloud. Again we have to choose a basic runtime cloud, Singapore integration cloud, and attachment name is production training cloud. And okay, so here we can see the two
type runtime engine, production training cloud and test training cloud. So let's jump into 6 point, attach the cloud to environment. So now we have to attach the cloud to environment. So for production environment we have to attach production training cloud. So we need to drag and drop into production and OK. And now for text environment we have to select test training cloud and drag and drop into test environment and select OK. Now you can see here production environment attached production testing cloud and test environment attached test training cloud, right? So we have to check here also. Attached production training cloud, there is attached cloud, and if we need to detached, so we have to click here, right, and then OK. Here we can see the runtime information like type cloud attached, status online, and production classifications. We can see production here, environment classification, attachment instance ID we can see here. It's all about the runtime engine. So that's all for today's video. We will learn more in upcoming video. Till then, bye. Thank you. Hi everyone, this is Amit Verma. Welcome back to Boomi Techie. So today's video we will learn these points. First point is a defining start step. Second point is understanding start step types. Third point is understanding connector step. Fourth point, understanding connector step type. And fifth point, understanding FTP v2 connector action. Sixth point, FTP v2 connector connection and operation. Seventh point, configuration FTP v2 connector. And eighth point, understanding disk v2 connector action. Ninth point, disk v2 connection and operation. 10th point, creating disk v2 connector. And 11th point, understanding set property step. And 12th point, creating set property step. So we will cover all these points in today's video. So let's get started. So first point is defining start step. So let's see. So here we can see start step. See the definition about start step. So यहाँ हम देख सकते हैं first point, defining start step. The start step begins the process flow. It automatically added to each new process and cannot remove. तो यहाँ हम देखते हैं ये प्रोसेस जो भी एक्टिविटी स्टार्ट होगा वो स्टार्ट स्टेप से स्टार्ट होगा और इसको हम रिमूव नहीं कर सकते बिकॉज थ्रू स्टार्ट स्टेप वी कैन क्रिएट द एक्टिविटी और प्रोसेस. Without start step we can't create any process or any activity, right? So this is a necessary step. We need to add a beginning of the process. Second point is understanding start step types. So let's see here start step type. So here we can see type connector, pairing partner, data pass through, no data. So let's see the definition of these points. So connector, first type is a connector type. So retrieves data into integration using one of the application or technology connectors. For many application connectors, the icon is specific to the application. Means through connector type we can connect with the source point like any database, any applications, and Boomi already provide few applications, few connector, so we can use through connector type, right? Next one is a trading partner. Trading partner के लिए हम देखेंगे
retrieves data into integration for specific trading partner and handles common EDI document standard such as XTOR and EDI fact. सो ट्रेडिंग पार्टनर टाइप हम तब यूज करते हैं जब हमें अपने ट्रेडिंग पार्टनर से डेटा लेना होता है या ट्रेडिंग पार्टनर को डेटा शेयर करना होता है. नेक्स्ट वन इज डेटा पास थ्रू. तो डेटा पास थ्रू के लिए क्या करेंगे देखते हैं. डेटा पास थ्रू रिट्रीव डेटा इनटू इंटीग्रेशन फ्रॉम द पेरेंट प्रोसेस और अनदर एक्सटर्नल सोर्स. सो डेटा पास थ्रू जो टाइप है कनेक्टर का, ये हम तब यूज करते हैं जब हम किसी प्रोसेस से डेटा को रिकॉल करते हैं किसी अनदर प्रोसेस में. या सपोज करो दो प्रोसेस है, एक पेरेंट प्रोसेस है, एक सब प्रोसेस है. सो अगर सब प्रोसेस से पेरेंट प्रोसेस से सब प्रोसेस में मुझे डेटा पास थ्रू करना है, इसके लिए डेटा पास थ्रू टाइप कनेक्टर हम यूज करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वन इज अ नो डेटा टाइप. तो नो डेटा कब यूज करेंगे? द प्रोसेस डज नॉट रिट्रीव डेटा फ्रॉम एनी सोर्स. इंस्टेड अ सिंगल एम्प्टी डॉक्यूमेंट गोज थ्रू द प्रोसेस फ्लो. तो नो डेटा टाइप हम तब यूज़ करेंगे जब हमें किसी सोर्स पॉइंट से डेटा फेच करने की ज़रूरत नहीं होती है. कुछ ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे हम किसी सोर्स पॉइंट से डेटा फेच नहीं करते हैं, वहाँ पे हम नो डेटा टाइप यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग कनेक्टर स्टेप. सो कनेक्टर स्टेप में देखते हैं. कनेक्टर हमने चूज किया है यहाँ पे. अब कनेक्टर स्टेप में क्या देखते हैं, हमें कितने क्या क्या ऑप्शंस हैं. एक तो कनेक्टर है. तो कनेक्टर में आप देखोगे बहुत सारे कनेक्टर प्री बिल्ड कनेक्शंस हैं एप्लीकेशंस के लिए या किसी सोर्स पॉइंट के लिए या किसी डेटाबेस के लिए, वो हम यूज कर सकते हैं. जैसे डिस्क के लिए है, एफटीपी के लिए है, आप देखोगे सेल्सफोर्स के लिए, नेटस्यूट के लिए, एसएपी के लिए. तो एक तो हो गया कनेक्टर. हम कनेक्टर चूज कर सकते हैं कौन से टाइप का कनेक्टर हमें, कौन से टाइप के सोर्स पॉइंट से हमें कनेक्ट करना है, उस टाइप का हमें कनेक्टर यहाँ पे यूज करना होगा. ठीक है. अब देखोगे यहाँ पे कनेक्टर, तो इसमें देखोगे कनेक्टर में क्या है, द मेन कंपोनेंट कनेक्टर कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन नीडेड टू कनेक्ट टू द सोर्स और एप्लीकेशन. दे आर कंबाइनिंग ऑफ टू पार्ट्स, कनेक्शन एंड ऑपरेशन. तो यहाँ हम देखते हैं, सपोज करो एफटीपी सर्वर से हमें कनेक्ट करना है, तो हम क्या चूज करेंगे, FTP V2 कनेक्टर. अब FTP V2 कनेक्टर में हम देखेंगे कौन कौन से कॉलम है जो आपको कॉमन मिलेंगे. एक तो मिलेगा कनेक्शन, जो कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा हमें FTP सर्वर के लिए. और एक होगा ऑपरेशन. ऑपरेशन में क्या होगा, कौन सा एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. डेटा को फेच कर रहे हैं, डेटा को पुट कर रहे हैं, डेटा को पोस्ट कर रहे हैं, डेटा को डिलीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. ये सारे दो कॉमन जो कनेक्टर होता है, दो कॉमन फीचर्स वो हमेशा रहेंगे. यहाँ हम देख सकते हैं दे आर कंबाइंड ऑफ टू पार्ट्स, कनेक्शन एंड ऑपरेशन. जो कनेक्टर होता है वो दो पार्ट को कंबाइन करके क्रिएट हुआ होता है. एक होता है कनेक्शन, एक होता है ऑपरेशन. तो ये जिसमें होता है उसको हम कनेक्टर बोलते हैं. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट में आप देखोगे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कनेक्टर टाइप्स, टेक्नोलॉजी कनेक्टर, एप्लीकेशन कनेक्टर, कस्टम कनेक्टर. अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ. कनेक्शंस में गए. अब यहाँ पे आप देखोगे कनेक्टर, कितने कनेक्टर है, 274. 274 में आप जाओगे, आप देखोगे कितने सारे कनेक्टर हैं. कुछ टेक्नोलॉजी कनेक्टर है, कुछ डेटाबेस, कुछ एप्लीकेशन कनेक्टर हैं. सारे कनेक्टर हैं यहाँ पे. ठीक है. फीचर्ड कनेक्टर, नेटस्यूट, सेल्सफोर्स, एसएपी, शॉपिफाई. तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं. लेट्स सी द डेफिनेशन. Boomi has a library of connectors where you can access many software systems and data standards. Technology connectors are internal system components that provide codeless connection to and from touchpoint system using various protocols such as disk V2, database, HTTP client and SFTP. ठीक है. तो Boomi ने प्री बिल्ड कनेक्टर बहुत सारे क्रिएट किए हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं. जैसे डिस्क V2,
HTTP client connector, SFTP connector without coding. एप्लीकेशन कनेक्टर क्या होता है देखते हैं. एप्लीकेशन कनेक्टर रेफर टू पैकेज्ड इंटीग्रेशन सर्विसेज कंटेनिंग अ ब्रांडेड बूमी कनेक्टर built through our connector SDK. These are available in our community and let you complete by calling and system API of the software product. तो कस्टम कनेक्टर क्या होता है इसको समझते हैं. सो कस्टम कनेक्टर, यू कैन डेवलप, डिप्लॉय एंड पब्लिश कस्टम कनेक्टर. Custom connector take advantage of Boomi connector API using the connector SDK. So Boomi provide an option like you can create a custom connector also, right? तो ये हो गया कनेक्टर टाइप्स, लाइक टेक्नोलॉजी कनेक्टर हो गया, एप्लीकेशन कनेक्टर हो गया, कस्टम कनेक्टर हो गया. टेक्नोलॉजी कनेक्टर में HTTP, डेटाबेस, डिस्क V2 ये सब टेक्नोलॉजी कनेक्टर में आते हैं. एप्लीकेशन कनेक्टर में लाइक सेल्सफोर्स, नेटस्यूट, ये सब जो एप्लीकेशंस हैं इनके जो कनेक्टर प्री बिल्ट कनेक्टर ये एप्लीकेशन कनेक्टर्स में आएंगे. और कस्टम कनेक्टर में हम अपना कनेक्टर खुद क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग FTP V2 कनेक्टर एक्शन. तो आप देखोगे FTP V2 कनेक्टर हो गया. और FTP V2 कनेक्टर में आप देखोगे जो एक्शन है, FTP V2 कनेक्टर में जो एक्शन है, क्रिएट है, क्वेरी है, डिलीट है, गेट है. क्रिएट में क्या होगा, द क्रिएट एक्शन क्रिएट द फाइल ऑन FTP सर्वर. ठीक है. और अपडेट द फाइल ऑन FTP सर्वर. क्वेरी में क्या होगा, द क्वेरी एक्शन डाउनलोड्स फाइल फ्रॉम FTP सर्वर. डिलीट में क्या होगा, द डिलीट एक्शन डिलीट्स फाइल फ्रॉम FTP सर्वर होगा. और गेट में क्या होगा, द गेट एक्शन रिट्रीव सिंगल फाइल फ्रॉम FTP सर्वर होगा. तो ये सारे एक्शंस हैं FTP V2 कनेक्टर के, जिसको हम आने वाली वीडियो में देखेंगे. और अब इसमें देखोगे FTP V2 कनेक्टर जो है इसके कनेक्शन एंड ऑपरेशन में ये सारे हैं, क्वेरी, क्रिएट, लिस्ट, डिलीट, गेट. ये हम देखेंगे अपकमिंग वीडियो में. अब 7th पॉइंट देखोगे आप, कॉन्फ़िगरेशन FTP V2 कनेक्टर. तो कॉन्फ़िगर करते हैं FTP V2 कनेक्टर को, जो हमने प्रोसेस इंस्टॉल किया था लास्ट वीडियो में. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कन्वर्टिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन टू एक्सेल. अब इसमें क्या करेंगे, FTP V2 कनेक्टर्स को कॉन्फ़िगर करते हैं. ठीक है. कॉन्फ़िगर में क्या क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर में हम करते हैं सेलेक्ट बिल्ड कैनवस एंड इफ़ यू डू नॉट सी द कन्वर्टिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन टू एक्सेल प्रोसेस ऑन द कैनवस एक्सपेंड एंड द फोल्डर एंड डबल क्लिक द प्रोसेस. ये बोल रहा है कि अगर आपको आपका प्रोसेस नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कन्वर्टिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन. ठीक है. इसे आप यहाँ से पूरा देख सकते हो, कन्वर्टिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन टू एक्सेल. अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, कॉन्फ़िगर स्टार्ट स्टेप, वेरीफाई टाइप कनेक्टर हमने चूज कर लिया. एंड कनेक्टर इज FTP V2 कनेक्टर एंड एक्शन इज क्वेरी. तो देखो कनेक्टर हमने यहाँ चूज कर लिया, कनेक्टर FTP V2 और एक्शन में क्वेरी. ठीक है. ये हमने चूज कर लिया. देन क्या बोल रहा है ये, सेलेक्ट चूज द कनेक्शन फील्ड, नेविगेट हैश कनेक्शन फोल्डर एंड बूमी ट्रेनिंग FTP V2. बूमी ट्रेनिंग FTP V2. तो कनेक्शंस के लिए क्या करेंगे आप, कनेक्शंस के लिए देखो इन्होंने बोला इस फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पे कनेक्शंस जो भी हैं, कनेक्शंस कौन से हैं इसमें देखो, FTP V2 ये कनेक्शन हमें यूज करना है. FTP V2 है, ये कनेक्शन हमें इसमें यूज करना है. इस कनेक्शंस में चूज में गए, कनेक्शंस में गए, FTP V2 कनेक्शंस को चूज किया. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट टू ऑपरेशन सेलेक्ट प्लस आइकन. ऑपरेशन में आते हैं, प्लस आइकन को सेलेक्ट करते हैं. तो आप देखोगे एक न्यू टैब ओपन हो गया, न्यू FTP V2 कनेक्शन ऑपरेशन. कनेक्शन तो हमने क्रिएट कर लिया है, अब हमें ऑपरेशन को क्रिएट करना है. तो ऑपरेशन में क्या है, प्लस आइकन पे क्लिक करना है. देन क्या करना है हमें ये करना है, द FTP V2 ऑपरेशन इंपोर्ट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले टेस्ट आइटम क्लाउड. ओके. तो हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है. तो इंपोर्ट ऑपरेशन पे जाएंगे
एंड रन टाइम लेंगे, रन टाइम कौन सा लेंगे, टेस्ट एटम क्लाउड, टेस्ट एटम क्लाउड। ऑपरेशन में गए, टेस्ट लेंगे और एटम क्लाउड टेस्ट और रन टाइम हो गया। अभी ये चेंज हो गया, एटम मीन्स रन टाइम, टेस्ट रन टाइम क्लाउड। नेक्स्ट हम फिनिश करेंगे इसमें, इसको फिल्टर हमें इसमें यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट और फिनिश करेंगे, अब नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं इंपोर्ट। अब देखोगे ये फाइल इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देन फिनिश करते हैं, ठीक। तो आप यहाँ देखोगे हमने एक कनेक्शन क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं इंटर अकाउंट एक्सएमएल गेट द नेम फील्ड, स्क्रॉल, रिटर्न, ये सारे हम चेक करेंगे। इंटर अकाउंट एक्सएमएल गेट द नेम फील्ड, तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा रिटर्न एप्लीकेशन एरर रिस्पॉन्स। तो ये क्यों चेक कर रहा है, ये चेक इसलिए कर रहा है, इफ चेक्ड फेल्ड ऑपरेशन विल नॉट बी रिपोर्टेड इन मैनेज, अलाउ यू टू एक्ट ऑन देम इन योर प्रोसेस। तो अगर प्रोसेस में एक्टिविटी में कोई एरर आता है तो ये रिटर्न करेगा पॉपअप। वी कैन सी हियर ऑपरेशन नेम न्यू एफटीपी v2 कनेक्टर ऑपरेशन। सो नाउ वी नीड टू चेंज द ऑपरेशन नेम, ऑपरेशन का नाम हमें चेंज करना होगा। तो एक्सएमएल अकाउंट एक्सएमएल गेट, ये हमें नाम रखना है। कॉपी करते हैं यहाँ से, पेस्ट करते हैं यहाँ पे, अकाउंट एक्सएमएल गेट ये नाम है, और सेव इट, सेव करते हैं, ओके करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जो स्टार्ट शेप है ये कॉन्फ़िगर हो गया है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं टाइप कनेक्टर टाइप है, कनेक्टर एफटीपी v2 कनेक्टर है, कनेक्शन हमने यूज़ किया जो प्री बिल्ड था, और आप देखोगे एक्शन में क्वेरी है, ऑपरेशन हमने क्रिएट किया है, इंपोर्ट किया है, और ऑपरेशन का नाम है अकाउंट एक्सएमएल गेट, ठीक है। अब इसको ओके करते हैं, सेव करते हैं इसको, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रोसेस किधर गया, कन्वर्टिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन टू एक्सेल। सो ये प्रोसेस है हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंडिंग डिस्क v2 कनेक्टर। सो डिस्क v2 कनेक्टर में सेम होगा, क्रिएट, डिलीट, गेट, लिस्ट, लिसन, ये सारे एक्शंस हैं, क्वेरी एंड ऑपरेशन में आप देखोगे क्वेरी, डिलीट, लिस्ट, डिलीट, गेट, लिसन, तो ये सारे ऑपरेशन के एक्शंस हैं। हम देखते हैं यहाँ पे डिस्क v2 कनेक्टर, यहाँ पे डिस्क v2 कनेक्टर में कनेक्टर क्या, डिस्क v2 कनेक्शन हम इंपोर्ट करेंगे, जो प्री बिल्ड कनेक्टर है जो हमने इंस्टॉल किया है प्रोसेस लाइब्रेरी से, वहाँ से हम करेंगे। एक्शन में देखो, एक्शन में कई सारे एक्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे आपके, क्रिएट, अपसॉर्ट, डिलीट, गेट, क्वेरी, लिस्ट, ये सारे एक्शंस हैं, ठीक है, ऑपरेशंस। सो हम कॉन्फ़िगर करते हैं इसको भी, जैसे प्रीवियस स्टेप हमने किया था। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले तो डिस्क v2 कनेक्टर, डिस्क v2 कनेक्टर ओपन करेंगे और क्रिएट में जाएंगे एक्शन में। डिस्क v2 कनेक्टर ये हो गया कनेक्टर टाइप, एक्शन में क्रिएट हो गया, और कनेक्शंस में आप देखोगे कनेक्शन में वर्क डायरेक्टरी है, तो ये वर्क डायरेक्टरी कनेक्शन को हम यूज करेंगे। यहाँ पे चूज़ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं वर्क डायरेक्टरी 2, इसको सेलेक्ट करते हैं, एक्शन क्रिएट है। ऑपरेशन में देखते हैं, ऑपरेशन में क्या करना है हमें, ऑपरेशन में प्लस आइकन पे क्लिक करना है, ऑपरेशन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑपरेशन को इंपोर्ट करते हैं, ऑपरेशन को इंपोर्ट करते हैं। रन टाइम हमें क्या यूज करना है, टेस्ट, रन टाइम हमें यूज करना है टेस्ट, तो टेस्ट रन टाइम हम यूज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट करते हैं इसको, नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं इसको। अब
देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। इसका नेम हमें यूज चेंज करना होगा। तो नेम क्या है, राइट यूनिक। तो राइट यूनिक हम नेम करते हैं। राइट क्यों है, क्योंकि क्रिएट एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। इसका नाम चेंज करते हैं, राइट यूनिक कर देते हैं। और क्या करना है हमें, रिटर्न एप्लीकेशन एरर रिस्पॉन्स। तो उसको चेक करना, रिटर्न एप्लीकेशन एरर रिस्पॉन्स। अगर प्रोसेस में कोई एरर आता है तो हमें अपडेट्स मिल जाएगा अगर हम इसको चेक करते हैं तो, राइट। एंड नेक्स्ट है क्या है, चेक क्रिएट डायरेक्टरी इफ डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट है चेक क्रिएट डायरेक्टरी इफ डज नॉट एग्जिस्ट। सो चेक करेंगे इसको, चेक क्रिएट डायरेक्टरी इफ डज नॉट एग्जिस्ट, इस पर चेक करते हैं। और सेलेक्ट ओवरराइड फॉर एक्शन इफ फाइल एग्जिस्ट। ओवरराइड एक्शन करेंगे फाइल एग्जिस्ट है तो, ठीक है। एंड देन सेव एंड क्लोज, ओके। सो सेव करते हैं, ओके करते हैं, ठीक है। कर देना डिस्क V2 कनेक्टर से, एक्टिव V2 को डिस्क V2 से हमें कनेक्ट करना है। ये कनेक्ट हो गया। अभी सेव कर लेंगे। सेट प्रॉपर्टी क्या होता है, सेट प्रॉपर्टी स्टेप में हम जो भी वेरिएबल है उसको हम सेट कर सकते हैं और फिर उस वेरिएबल को किसी और एप्लीकेशन में, किसी और स्टेप में या किसी और प्रोसेस में रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अ वेरिएबल, जैसे हम प्रोग्रामिंग में एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं फिर हम उसको रिकॉल करते हैं मेनी टाइम, ऐसे ही इसमें सेट प्रॉपर्टी है। सेट प्रॉपर्टी स्टेप में हम प्रॉपर्टी को सेट करते हैं और फिर हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखो, स्टोर द वैल्यू इन मेमोरी, फैसिलिटेट योर इंटीग्रेशन। और प्रॉपर्टी में देखो क्या होता है, द प्रॉपर्टी सेटिंग द पैरामीटर। जो पैरामीटर होता है किसी वेरिएबल का, वो पैरामीटर हम सेट करना होता है सबसे पहले। फिर ये पैरामीटर कनेक्टर टाइप में आ जाएंगे, कनेक्टर में यूज़ हो सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट में यूज़ हो सकते हैं, देख सकते हो। ये एग्जीक्यूट टाइप का है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कनेक्शन, एग्जीक्यूट एंड लॉजिक। तो एग्जीक्यूट टाइप में सेट प्रॉपर्टी आता है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। पहले हम प्रॉपर्टीज सेट करेंगे। तो प्रॉपर्टी सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है। देखो प्लस आइकन क्लिक करना तो प्रॉपर्टी टाइप आ गया। कौन कौन से प्रॉपर्टी टाइप है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, डायनेमिक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, डायनेमिक प्रोसेस प्रॉपर्टी, MIME प्रॉपर्टी एंड प्रोसेस प्रॉपर्टी। ये सारे प्रॉपर्टी हम अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। सो इसमें हमें क्या सेट करना, चूज प्रॉपर्टी ऑप्शन लाइक कनेक्टर टाइप। तो कनेक्टर टाइप है ये, एंड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है, कनेक्टर टाइप है। कनेक्टर में कौन सा कनेक्टर है, डिस्क V2 कनेक्टर, डिस्क V2 कनेक्टर में प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, फाइल नेम है, डायरेक्ट क्या है तो फाइल नेम है, ठीक है, फाइल नेम है। अब इसको ओके करेंगे। अब जब ये प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं, अब इसकी वैल्यू सेट करेंगे। प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और इसकी वैल्यू क्या है, पैरामीटर इसकी V2 फाइल नेम, वैल्यू क्या होगा, account.xml, ठीक है। अब इसको ओके करेंगे तो सेव करेंगे, ओके करते हैं और इसको सेव करते हैं। और सेव करते हैं तो हम देख सकते हैं स्टार्ट हमने किया है FTP V2 कनेक्टर से। फिर इसको हमने सब कॉन्फ़िगर किया। कनेक्टर टाइप कितने टाइप के होते हैं, स्टार्ट से कितने टाइप के होते हैं, कनेक्टर, ट्रेडिंग पार्टनर, डेटा पासवर्ड, नो डेटा। फिर कनेक्टर हमने इसमें चूज़ किया, कनेक्शन क्रिएट किया जो प्री बिल्ड कनेक्टर था, जो हम प्रोसेस लाइब्रेरी से एक्टिविटी डाउनलोड किए थे, इंस्टॉल किए थे, एंड एक्शन क्वेरी किए, फिर ऑपरेशन को इम्पोर्ट किए और ऑपरेशन का नाम हमने लिखा यहाँ पे account.xml गेट, ठीक है। फिर डिस्क V2 कनेक्टर में गए। डिस्क V2 कनेक्टर में सेम प्रोसेस हमने फॉलो किया। कनेक्टर कौन से टाइप कनेक्टर हमने यूज़ किया, डिस्क V2 टाइप कनेक्टर। फिर कनेक्शन हमने इंपोर्ट किया जो प्री बिल्ड था, डिस्क वर्क डायरेक्टरी
टू कनेक्शन, एक्शन क्रिएट हमने चूज किया, और एंड ऑपरेशन का नाम क्या दिया, राइट यूनिक, और हमने इसको इंपोर्ट किया। ठीक, फिर सेट प्रॉपर्टी में हमने सेट प्रॉपर्टी चूज किया, सेट प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी सेट किए डिस्क वी टू फाइल नेम, एंड फाइल नेम इसकी वैल्यू हमने स्टैटिक सेट किया। आप यहाँ से देख सकते हो स्टैटिक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है ये स्टैटिक वैल्यू, ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में आता है, और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में स्टैटिक वैल्यू क्या है, अकाउंट डॉट एक्सएमएल। सो फिर हमने इसको सेव किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज, लेट्स कनेक्ट फॉर अपकमिंग वीडियो। थैंक यू। Hi everyone, this is Amit Verma. Welcome back to Boomi Techie. So in this video we will learn major two things like about test mode and document flow. So first point we will learn about test mode, why use test mode, and second point about error message and data limits, and third point defining documents, and fourth point what document type does Boomi platform support, and fifth point how documents flow. So we will cover all these points. So let's get started. So let's see first point about test mode. So test mode allow you to quickly test the process from the build canvas without deploying the process. So test mode we can see here on Boomi platform. We have to click on integration service module, and then we can see canvas. So this is a activity process, and for this we can test the process. So for test the process in test mode we have to choose test runtime item, right? We will see. Second point is error message and data limits. So Boomi produce the error message if you exceed the test mode data limit. A complex process can encounter an error. So जो टेस्ट मोड होता है, जो हम रन टाइम टेस्ट रन टाइम यूज़ करते हैं, उसकी एक लिमिट्स होती है। तो अगर वो लिमिट्स जो डेटा हम पुल कर रहे हैं सोर्स सिस्टम से या सोर्स पॉइंट से, तो जो डेटा हम पुल कर रहे हैं अगर वो डेटा की साइज़ जो टेस्ट मोड में साइज़ लिमिट है उससे एक्सीड करता है तो वो एरर मैसेज शो करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये इस टाइप का एरर आपका आएगा, योर प्रोसेस फेल ड्यू टू टेस्ट मोड डेटा लिमिट्स, प्रेस रीट्राई जस्ट द डॉक्यूमेंट्स ऑन द स्टार्ट से। सो सपोज करो ये सोर्स पॉइंट है FTP। सो अगर ये डेटा जो है 2 GB का डेटा है और टेस्ट मोड वो अलाउ नहीं करता है, तो ये क्या होगा, ये प्रोसेस फेल हो जाएगा। जब हम टेस्ट करेंगे तो इस टाइप का एरर मैसेज पॉपअप होगा। अब टेस्ट मोड में लिमिट्स क्या है हम देखते हैं। टेस्ट मोड सपोर्ट्स कनेक्टर इंटरवल इन द फॉलोइंग 100 मैक्सिमम डॉक्यूमेंट काउंट एंड 10 MB टोटल साइज। जो टेस्ट मोड है, जो टेस्ट मोड में हम प्रोसेस को टेस्ट करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे कह सकते हैं टेस्ट पर्पज से, तो उसकी जो साइज़ होगी वो साइज़ होगी 100 डॉक्यूमेंट मैक्सिमम होगा। 100 डॉक्यूमेंट से ज़्यादा वन टाइम में वो सपोर्ट नहीं करेगा, वो फेल हो जाएगा, एरर मैसेज शो करेगा। या फिर 10 MB टोटल साइज, ये दोनों होना चाहिए, एक्सीड नहीं होना चाहिए। 100 डॉक्यूमेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो डेटा फेल हो जाएगा, एग्जीक्यूशन फेल हो जाएगा टेस्ट मोड में और ये पॉपअप शो होगा। थर्ड पॉइंट आप देखते हो डिफाइनिंग डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स क्या है पहले ये हम समझते हैं। सो अ डॉक्यूमेंट इज अ सेट ऑफ डेटा डेट फ्लो थ्रू द बूमी प्रोसेस। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट क्या है, सेट ऑफ डेटा है, कलेक्शन ऑफ डेटा है जो बूमी फ्लो के थ्रू प्रोसेस के थ्रू फ्लो होता है, बूमी प्रोसेस के थ्रू फ्लो होता है। इट कैन बी सिंगल रिकॉर्ड, अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड और एन एंटायर फाइल। ये कुछ भी हो सकता है, डेटा जो डॉक्यूमेंट्स होगा कुछ भी होगा, एक सिंगल रिकॉर्ड होगा या ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड हो सकता है, बहुत सारे फाइल्स होंगे एक साथ, या एक सिंगल फाइल हो सकता है या फाइल हो सकता है। तो इस टाइप का डेटा जो हम सोर्स पॉइंट से पुल करते हैं, गेट करते हैं, उस डेटा को हम डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, डिफाइनिंग डॉक्यूमेंट्स। फोर्थ पॉइंट देखोगे, व्हाट डॉक्यूमेंट टाइप डज द बूमी प्लेटफॉर्म सपोर्ट। सो बूमी कौन कौन से डेटा फॉर्मेट को, डॉक्यूमेंट को
सपोर्ट करता है। तो ये बूमी 5 टाइप डेटा फॉर्मेट सपोर्ट करता है। इसमें फर्स्ट अब देखोगे एक्सएमएल है, एक्सएमएल का ये फॉर्मेट होता है। जेसन हो गया, जेसन का ये फॉर्मेट होता है। फ्लैट फाइल को सीएसवी फाइल भी बोलते हैं, कॉमा सर्किट फाइल। तो ये भी इस टाइप का होता है। डेटाबेस टाइप का डेटा सपोर्ट करता है ये डॉक्यूमेंट। एंड ईडीआई टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब 5 टाइप के डेटा फॉर्मेट को ये सपोर्ट करता है। इससे कुछ ये सोर्स पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट इसी में से होना चाहिए। या तो सोर्स पॉइंट एक्सएमएल होगा, या जेसन फॉर्मेट में होगा, या फ्लैट फाइल में होगा, या डेटाबेस या एडीआई होगा, या जो डेस्टिनेशन जहाँ पे हम डेटा को सेंड करेंगे वो इन 5 में से ही होना चाहिए। सपोज करो एक्सएमएल फॉर्मेट में हम डेटा गेट कर रहे हैं सोर्स पॉइंट से, बट डेस्टिनेशन पॉइंट पे उसको फ्लैट फाइल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे थ्रू मैप कंपोनेंट। ये हम अपकमिंग वीडियो में देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हाउ डॉक्यूमेंट फ्लो। डॉक्यूमेंट फ्लो कैसे करता है, आप देखोगे ये ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट है, इसमें 4 फाइल्स हैं। ठीक है। तो ये फ्लो कैसे करेगा, ऐसे एक फाइल फिर दूसरा फाइल फिर तीसरा फाइल चौथा फाइल, ऐसे नहीं जाएगा। ये ग्रुप में मूव करता है। आप यहाँ देखोगे देयर आर 4 डॉक्यूमेंट ऑन द कैनवस, ईच रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल अकाउंट, एंड द प्रोसेस रीड्स द डॉक्यूमेंट एट द स्टार्ट स्टेप। दे फॉलो टुगेदर एज ए ग्रुप। ओके। तो स्टार्ट स्टेप में ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। सपोज करो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। सो ये जो 4 डॉक्यूमेंट जब मूव करेंगे पॉइंट ए से, लाइक स्टार्ट स्टेप से सेकेंड वाले पॉइंट पे, लाइक मैप कंपोनेंट पे, मैप शेप पे, मैप स्टेप पे, तो ये ग्रुप में फ्लो करेंगे। दे फ्लो टुगेदर एज ए ग्रुप बट आर प्रोसेस इंडिविजुअली। ये ग्रुप में मूव करेंगे, लेकिन जब एग्जीक्यूट हो गए तो इंडिविजुअली होगा, प्रोसेस जो होगा इंडिविजुअली होगा। ओके। आप यहाँ से देख सकते हो एक डायग्राम हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट से मूव किया, ग्रुप में मूव किया सेकेंड पॉइंट तक। तो अभी हम टेस्ट मोड देखते हैं, प्रोसेस को कैसे टेस्ट करते हैं। तो आप इसको हम डीअटैच करेंगे और अटैच करेंगे सेट प्रॉपर्टी शेप से, एंड फिर इसको हम डिस्क से अटैच करेंगे। अरेंज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है अरेंज का, इस पर आप क्लिक करोगे तो देखो ये इसको शेप करोगे और ये अरेंज हो जाएगा। ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है, एफटीपी। तो जो डेटा है हम एफटीपी सर्वर से पुल कर रहे हैं। हमने कनेक्शन क्रिएट किया, और कनेक्शन क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, क्वेरी, एक्सेल क्वेरी हमने लिया, ऑपरेशन में गेट किया। ठीक है, क्वेरी के थ्रू। तो एफटीपी सर्वर से जो फाइल है हम उसको गेट कर रहे हैं। सेट प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट किया है। किसका प्रॉपर्टी हमने सेट किया, फाइल नेम। फाइल नेम हमने क्या सेट किया है, account.xml। ये फाइल नेम है, ये हमने सेट किया। फिर डिस्क एक डिस्क सर्वर है, डिस्क डायरेक्टरी, वहाँ पे हमने क्या किया, क्रिएट एक्शन किया, डेटा को पोस्ट किया, जो भी फाइल आएगा। अब इसको हम टेस्ट करते हैं। हमने देखा था यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट था टेस्ट मोड। तो हम इसको टेस्ट करेंगे टेस्ट मोड। टेस्ट का यहाँ पे आइकन है, आप देखोगे। इसको हम पहले शेप करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे। टेस्ट के लिए कौन सा रन टाइम हम यूज़ करेंगे, टेस्ट ट्रेनिंग क्लाउड। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हम ओके करेंगे। तो आप देखोगे जो येलो शेडो बन के आ रहा है, तो ये अभी प्रोसेस है, टेस्ट हो रहा है। अगर ये ग्रीन हो जाएगा इसका मतलब ये एग्जीक्यूट हो गया, ये टेस्ट हो गया, कोई इशू नहीं है। अगर रेड हो जाएगा तो यहाँ पे इशू है। अब देखोगे अभी ये ग्रीन हो गया, मीन्स ये तीनों टेस्ट हो गया है और कोई एरर नहीं आया, रेड शैडो नहीं हुआ है यहाँ पे। तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि सक्सेसफुली ये एग्जीक्यूट हो गया टेस्ट मोड में। अब हम डेटा यहाँ देख सकते हैं। सपोज करो ये डेटा एफटीपी फाइल है, एफटीपी सर्वर से फाइल आ रहा है, और इसको हमें देखना है कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, 1 और 2, 2 डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स एफटीपी सर्वर से आ रहे हैं। ठीक है, हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके हम इसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके नोटपैड में इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, और
इसको क्लोज करते हैं, सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, 2 डॉक्यूमेंट आए हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आते हैं, सेकंड पॉइंट पे सेट प्रॉपर्टी, यहाँ भी आपको दिखेगा 2 डॉक्यूमेंट आए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डॉक्यूमेंट, दोनों अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं जो डेटा है इसमें। आप देखो सेकंड वाले में इसका नाम चेंज होगा, इसकी आईडी चेंज होगी, इसकी आईडी चेंज होगी, नाम भी कंपनी का चेंज है। तो 2 अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। तो डिस्क में, अब डिस्क में हमने क्या किया, इसको पोस्ट किया हमने दोनों डॉक्यूमेंट्स को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स 1 में डेटा, ठीक है। अभी इसकी साइज देखो 616 बाइट्स, मीन्स 10 MB से एक्सीड नहीं हुआ है। फिर इसकी साइज देखो यहाँ पे 662 बाइट्स। अगर ये 10 MB से ज़्यादा इसकी फाइल साइज होती तो एरर मैसेज आता, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स कनेक्ट फॉर अपकमिंग वीडियो, थैंक यू। Hi everyone, this is Amit Verma. Welcome back to Boomi Techie. So in this video, we will cover these points. First point is a defining profile, like what is a profile. Second point is a way to create a profile, how to create a profile. Third point is a possible reason to manual build or import profile. So how we can manually build the profile and import the profile, we will see in today's video. And fourth point is activity, create a XML profile. And the fifth point is a defining map step, and the sixth point is a create a map step, and this is activity. And seventh point also activity, choose existing XML profile, and eighth point is activity, a manual create flat file profile. So we will see these points, and as I told in previous video, Boomi support 5 type profile like XML, JSON and database EDI. So we will see in today's video XML profile and flat file profile. So let's get started. Here we can see profile describe the layout or format of the document. So profile is a structure of the document, we can see, and it is a component we can choose, we can use as a component, like we can use more than one time in the process. So this is considered as a component. In profile there is a lot of fields like delimiter, column, position, data type, minimum and maximum length. So we will set these point in profile. Here we can see a profile is not a step but is saved to component library. As I told, profile count as a component that we can use more than one time in the process. So we can use profile in these steps like decision step, map step and message step. Let's check second point, way to create a profile. So how we can create a profile, here we can see manual, import profile or schema, through import file or through import schema. And third point is import a connection operation, through connector we can import the profile also. So we will see in upcoming video. Third point, possible reason to manual build and import profile. Here is a scenario how we need to choose a manual and how we need to choose a import. So first point, use when you have to import a profile. So in that case you need to choose import option, and second option, require each field and layout to be defined. So in that case we need to choose a manual option. Third point, use when importing is not allowed by connector. So there is a few connector that is not allowed to import a profile. So in that case we need to choose a manual option, right? Let's see fourth activity. This is activity, create an XML profile. So let's go into platform, training account. So this is our activity that we created on previous video, converting account information to XML.
Now we need to create a XML profile. So for that we have to choose a create new option, and then you have to select a profile type. Let's see here, profile, right? Flat file profile, but we need to choose XML profile, right? The name of the profile is account.xml, account XML, right? And then we need to import. I'm having XML file in my computer system, so I'm importing that file for creating XML profile. So click here, import a profile, and we need to choose XML type, right? This is a schema, but I'm having XML file, so I choose XML file and then choose a file option, and then I'm going to my desktop, and here is a file, account. File name is account.xml. You can see here account.xml, and then next, and then finish. Now you can see the XML profile we are importing from my computer system. So this is a element, this is a field like a account, company ID, company name, website, street. This is a fields of XML format profile. Now jump into next option, fifth point, defining map step. Map step transform the data from one format to another format. So you can see here, this is a XML profile, XML account, and this is a CSV profile, account CSV. So through map step we can transform profile from XML to CSV. We will see in today's video setting up profile in map step. There are two ways to set a profile in map step. As I told you, you can import from an existing profile or set up manually, right? For importing, use this method. You to import profile already exist. We can import profile from another process also, and for that we need to follow these steps: profile type, and then choose first component option, and then we can select the profile that we have already used in another process, so we can import that profile also, right? And manually, as I told, we can manually choose the profile, and then you have to choose a plus icon, and manually you have to create all fields like account, company name, address, and all. So let's see the activity 6. Activity, create a map. So let's save it. Save. So now here we can see the profile name, account XML profile. Save and close. You can see here, and now we have to create a map. So let's jump into Component Explorer, choose map step, and then you can see here about map step. Use map step to transform data from one format to another format, right? So let's configure it. Configure, plus icon, choose plus icon, and then write map name. So map name is account XML to CSV. So here we transform the data from XML to CSV, right? Let's see the next step. Choose existing XML profile. Let's see, check choose option and XML profile. We need to select XML,
and then existing profile, you have to click here, and we have just created account.xml profile, right? So we can import that profile also, we can choose. So let's select account XML and OK. So now you can see account XML, and that is a field name, account, company name, company ID, website, city, state, portal code. And in maps here we already created a profile on source point. From source to destination we have to change XML to CSV, right? Check next point, activity, manually create a flat file profile. So here we need to create manually flat file profile. So choose here and choose flat file, and here we have to create manually. So here we rotate the name of profile like account CSV profile. There is no any field, so we need to create manually. So for that we have to choose options and then check use column header. You can read here, if this option is selected, the first row of the document is assumed to contain column labels and is ignored. File type delimited, file delimited में comma delimited. Let's jump data elements option. So now we need to create a element. So let's add multiple elements. Element count is 8 and OK. So here you can write a field name one by one. So first field name is account ID. Second field name is account name. Third field name is address 1. Fourth field is address 2. Next one is a city. Next one is state. Next one is zip. And last one is a status. So here we created a manually profile and save it. This is a flat file profile. Save and close. OK. And then you can see here in profile. This is a map step. Within the map step there is a 2 profiles, XML profiles and CSV profiles. And that's all for today's video. We will see other points in upcoming video. So till then, thank you. Hello everyone, this is Amit Verma. Welcome back to Boomi Training. So in this video we will learn these points. First point is understanding mapping, and second point mapping method. Third point, thing to consider when choosing mapping method, and fourth point, how to manually map element and how using Boomi suggest. And fifth point, activity, map the field. And sixth point, what is default value. And then again activity. Seventh point, set the default value. And eighth point, complete the process. So we will cover all these points in today's video. So let's get started.
First topic is understanding mapping. So mapping show how elements in source profile correspond with those in destination profile. So we will check in the map shape. There are two profiles like destination and source. So in the source profile, that is a XML base, and destination profile, that is a CSV flat file. So we will see the profile element and then we will map. So second point is a mapping method. So there are two ways to map, like manually and by using Boomi suggest. So let's see about the manual mapping. So drag the source element to corresponding destination profile element, right? So from source profile we have to choose one of the element, and then we have to map corresponding into destination profile, right? And second option, Boomi suggest wizard. So like Boomi provides mapping suggestion draw from vast database of mapping contributed by Boomi community, right? So in that case, if you have in source profile, like there are 500 plus elements, so in that case you have to choose a Boomi suggest, because it's take less time compared to if you choose manual mapping. So let's see the next point. Third point is a things to consider when choosing mapping method. So you can see here in the image, like manual mapping and Boomi suggest wizard. So like speed up mapping. So for if you want to map quickly, so you have to choose a Boomi suggest wizard. And address field Boomi suggest incorrectly, so in that case you have to choose manual. Through Boomi suggest, if you mapped your source element to wrong destination elements, in that case you have to choose manual method, right? And the third point is leverage knowledge of Boomi community. So in that case you have to choose Boomi suggest wizard, right? So let's see fourth point, how to manual map element and how using Boomi suggest. So you can see here, manual map element, drag each field from source profile corresponding destination profile to manual map elements, right? And for Boomi suggest, we will see how we can map the profile through Boomi suggest in activity section. So let's create our first activity, map the field, right? So we have to choose these source field, like company ID, company name, street address to city, state, and postal code corresponding to destination profile, like account ID, account name, address 1, address 2, city, state, zip. So let's map. So now I'm choosing integration module, and then we have and then we jumping into our activity section where we created the process. See, in last video we have covered map. You can see here about the map step. This is a source profile, this is a destination we have created in previous video. Account CSV flat file for the destination profile, and account XML, that is for source profile, right? So let's map manually first. Company ID, account ID, company name, account name. So you have to select company ID and drag, and company ID and drag account ID, company name, account name, and next street address 1, street address 2, address 2. So let's select street address 1, street address 2, address 2, right? Next one is city, state, postal code, zip. City, state, postal code, zip, right? So we have done manual mapping. Save it.
Now let's see next point, setting a default value. Let's see first Boomi suggest option. So if you want to map through Boomi suggest, so you have to choose this option, Boomi suggest. See, and you can see all options like high confidence suggestion, medium confidence and low confidence. Let's skip it. Next, you can see all the source point of element, account company ID, account to company ID 2. This is a destination profile element. So you can check here one by one, and then you can choose next option. So through this option you can map profile from source XML to destination CSV. So that is a Boomi suggest. So let's cancel it. We already mapped the profile through memo. Let's save it. Now let's choose the next point. Next point is setting a default value. Next point is setting a default value. So let's see what is the default value. So the Boomi platform assign a default value to destination profile element when no value exists in the source profile, right? So whenever in the source profile there is no value, so in that case we have to choose a default value for destination profile, right? Next one, if the destination profile requires the field value not included in source profile, so you should create a default value, right, as I told you. So let's see how to create a default profile. So see, from the working with the profile section, you may recall that there are source profile and destination profiles, and that an element in the field in the profile. Boomi platform uses default value in the following instances. First, when the source profile element is null, right? So in that case we have to set a default value for destination profile. Next, when the source element profile is a blank, in that case also we have to set a default value in destination profile. And next one, there is no source element from the destination profile. So in all three cases you have to set the default value, right? So let's set the default value, like there is no status element. So this is a status element in the destination profile, so you have to choose a default value, like click here in the drop down icon and select the default value, and you have to put 1 and OK. So 1 is a default value of status, right? You can see here how to, you can see in the image how to set a default value. And next option, let's see what is the next option, complete activity. So let's save and close and OK. The map step almost done, so you have to arrange map step in the process, right? Now we have to drag and add into process property map step. So let's drag in here and add a source point like start step into map and map into state, map into set property, and there is option for shape, and here you can arrange. Now we have to select a stop step, so let's check here, stop. So here you can see to end the process or to stop the further processing of the document, use the stop step. Keep in mind the stop step does not generate the error message, right? If you want to generate an error message, we have to choose exception step, right? So for ending the process, we have to choose stop step. So let's connect this connector with the end step. So it's add, and so it's added, and save it. So that's all for today's video. We will see next topic in upcoming video. Thank you. Hello everyone, this is Amit Verma. Welcome back to Boomi Techie. So in this video we will cover these points. So first point is a deployment workflow. Second point, why deploy the process. Third point, defining packaged component, like what are packaged component. And fourth point, why create packaged component. Fifth point, what is versioning. And sixth point, how to create a packaged component, like we will see activity, packaged
process. And seventh point, defining deployment, like a deployment functionality. And eighth point, deployable components. We will see about deployable components. And ninth point, how deploy the process. We will create an activity, deploy a process. So let's see one by one. So first point, the deployment workflow. Deployment is how you prepare your processes and deployable components to run and operate in test and production environment. So before the deployment, your activity, like your processes, you have to cover these points, like build and create a packaged component and deploy the process. So let's see the build option. So a developer build a process or deployable components on the process canvas. So you have to choose first to create a activity or process, and the second point is create a packaged component. A developer or administrator creates a packaged component, like a component version, by creating a packaged component from build or packaged component page. We will see. And third point, deploy the package. So an administrator deploys the packaged component in one or more environment from packaged component or deploy page or deployments page. So we can deploy your process one or more environment. We will see in upcoming video. And the second point, why deploy a process. So control specific versions. So let's see, deployment controls specific version in different runtime environments as a part of development lifecycle, like example test and production. So through next point, manage versioning. So through manage versioning features, like if we create a packaged component for a process, so we can control the versions of the process, like if we choose point 1 and point 2. So these are two types of version of the process. So we can use a previous version of the process in a future. That's why there is a need for managed versioning. Next point, isolate the process version. Deployment isolates the version of the process running in runtime environment from ongoing changes made in process canvas. And next, for complete audit history. So through deployment, we can provide a complete audit history for version. Third point, defining packaged component. What are packaged component? So when you create a packaged component or process, you take snapshot of each deployment on a build page. You typically do this when you are finished building and ready to deploy to your environment. So let's see. Next point, why create a packaged component. So availability to assign a single version of number, like packaged component lets user assign a single version number to be tracked and referenced throughout the version deployment. And the next point is a greater control. So packaged component provide greater control over the life cycle and distribution of your process and components. Creating a packaged component with unique version allow you to track where you use each version. So we can check our components where has used these component, and we can control the version, like within that component we can use a previous version also. Next point, what are versioning? So let's see, create a new version. Create a new version for each component, that is a versioning. Like you can specify the version number if you want to, or you can let the Boomi platform generate it for you. So we can define a version also, and otherwise Boomi generate a default version number. And the version number stay with the packaged component no matter what. Version naming. So what should version naming? So you can use any alphanumeric number. For example, you can name it version 1.0 and alpha release also. So let's see activity. Activity is
package a process. So for package a process, let's see into integration mode, and we will see our previous process, and we have to create a package for previous process. So let's see, this is a process. This is our process converting account information to Excel, and now we need to create package. So see, this is a process, and here is an option to create a packaged component. So let's choose this box, create a packaged component, and then you can see all selected, process selected, right? And then add detail. In the add detail, you have to put version name, right? So let's see the version name. So version name is IE, month, year and date. So let's create. So IE integration essential, month. Here you can write notes or packaged component, and then create a packaged component. So here you can see the pop-up, packaged component successfully created. Your packaged component were successfully created. To deploy your packaged component, click on deploy button below. So for now, let's close it. So here we can see deploy packaged component. So I'm clicking on packaged component menu, and you can see your process is packaged, right? Now the next point, 7, defining deployment. So deployment functionality. So deployment is how you prepare your processes and component to run and operate in test and production mode, right? So that is a deployment, how you can prepare your process for test environment and production environment. So that is called deployment. So let's see. Deployments include the following components and functions. Manage versions. First option, manage version. The crucial function of the deployment is managing the rollout of the specific version across different runtime environments. For example, you may deploy version 1.0, right, and test environment, and the version 2.0 to production environment. So there is a 2 version of the process, like 1.0 for test and 2.0 for production, right? Next point, manage a process and deployable version component. Another function is managing process and deployable version component, such as API proxy, API service, processing group, process route, flow service, and certificates. These are deployable. These components we can deploy individually, right? We will see in upcoming video. And next one, you can't deploy connector, map, trading partner, and flow proxy. This is also component like maps, connectors. We can use many times in the process. That is a component. So this is also component, but we can't deploy individually, right? Next topic, separates. So deployment separates the different version of the process running in the runtime environment from ongoing changes in the build page. Once we deploy a process, it stays the same even if we change the process on build page. Audit history. So another point, audit history. We can for deploy the process, we can control the audit. We can check the audit history also. So deployment provides the complete audit history for versioning and deployment. It includes the package, version, environment, deployment data, and deployment data deployed by any deployment nodes, right? So next point, deployable components. We already know about which component we can deploy and which component we can't deploy. So we can see here
deployable component, process, API proxy, API services, and certificates, public X.509, flow service, process route, processing group. And we can't deploy like connector, map, trading partner, and flow proxy. Let's check the 9 point about activity, how deploy the process. So we create a package of the process. Now the next point is a deploy the process. So let's see the activity, deploy the process. When deploying, the Boomi checks your account to make sure you have enough connection license to deploy the process, right? So first of all, you have to check your license, like how many processes you can deploy. This is not applicable for test mode. This is only for production mode. So next, let's see this activity. Focus on the task involved in deploying the process. Let's see deploy your process. In packaged components, select action menu and for your process and deploy. So in packaged component, this is a deploy option and this is a packaged component. You can see here action and the option of deploy. So let's select the deploy. Now I have to choose the environment. So let's select the production environment. We already created in a previous video, and the deployment nodes is initial deployments. Let's select next, select the version and review and then deploy. Now you can see the pop-up, deployment successfully, your packaged component were successfully deployed. Click on view deployments button and see all deployments for this account. So let's see, view the deployments. So here we can see only one deployment has deployed just now. So that's all for today's video. Thank you. Hello everyone, this is Amit Verma. Welcome back to Boomi Techie. So in this video we will cover these points. So first point is understanding process reporting. Second point, process reporting uses. Third point is activity, manually execute a process. And fourth point, understanding undeployed, like what does it mean to undeploy. And fifth point, a reason to undeploy. And sixth point, again activity, undeployed a process. So we will see one by one all these points. So let's get started. So first point is understanding a process reporting. So see here, process reporting is important because it searches for information about process execution and their related documents. So let's see under the process reporting tab. See here under the process reporting tab, you can see last executed process, like last past hour executed a process, right, as I mentioned in this text. Second usage is manually execute a process. So manually execute an integration process from process reporting by selecting runtime and process. So let's see here, second point, manually executed. So this is a execute process tab, and under the execute process tab you can see select runtime. You can see runtime and then process. So you can execute the process here, right? And let's see the third uses, filter process execution. The process manager filter execution by type, run, time and status. So you can see here there is a action tab, a gear icon, and under the gear icon you can see the process view, process deployment component, process state, right? And here is a auto refresh tab. You can auto refresh from this tab, right? And you can filter the past hour, past 24 hours, past week, and you can set the date range, right, within 1 month, 2 months.
and here you can see the filter like process runtimes, process choose the process like through process name, and then execution ID, execution modes. So all the filters here. So these are three uses. First uses, you can see last past hour executed process. Second, you can execute the process manually here, and third, you can filter the process through this tab, right? Let's see next topic. So next topic is a activity manual execution process. So as I told, you can manually execute the process. Let's execute again. So I am clicking execute a process tab and then select production training cloud runtime and then a process, right? And then execute. So we can see here the second executed process, right? Let's see the next point. Manually executed a process through process reporting. Now fourth point is understanding undeployed. What does it mean undeployed? So undeployed refer to remove packaged component from the list of active deployments, right? So fifth point, reason to undeployed. So there are 2 points. First point is the process is no longer necessary in the deployed environment. In that region, you have to undeploy the process. And second point, when you undeploy the process, you will regain the connection license, right? So these are main reason of undeployment. Second point, activity and undeployment. So let's see how we can undeploy the process. So for undeploy the process, you have to go in deployments, and under the deployment tab you can see deployed the process name, converting account information to Excel, and then you have to choose gear icon under the action tab, and here you can see undeploy the process. So let's undeploy. So that's all for today's video. We will see next point in upcoming video. Thank you.